Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सीडीएस अनिल चौहान एक कार्यक्रम में पहुंचे तो उन्होंने एक बेहद ही हैरान करने वाला बयान दिया। पाकिस्तान के साथ चले युद्ध को लेकर सीडीएस चौहान ने यह खुलासा किया कि जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर स्ट्राइक्स किए, उसके बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान भारतीय सेना ने पहुंचाया है। इसको लेकर खुलासा करते हुए सीडीएस चौहान ने कहा है कि हम आपके सामने बहुत जल्द ये जानकारी दे देंगे कि हमने पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान उड़ाए, उनके कितने रडार तबाह किए हैं। When I was asked about losses on our side, I said these are not important. The results and how you act is important. So it would be not very correct to talk about losses, means numbers, etc. Means I'll give a detailed kind of an answer on this. You see in a match, suppose you go into a football match and you win 3-2. He scored 2 goals and you scored 4 goals. So that's an even-sided match. But suppose you go on in a test match, cricket test match, and you win by innings defeat. Then there's no question of how many wickets and how many balls and how many players. It's an innings kind of a defeat. But since there is always this inquisitivity as to the result of your strikes, which was visible, which was a moral psychological domain and what was visible to us, all of us, means not to us, to globally, to everyone. So based on technical parameters like electronic intelligence, signal intelligence, at some point of time, we will take out this particular data and share it with us to answer those queries and inquisitiveness of people like you who keep telling me how many aircraft did we destroy, how many radars did we destroy. So we'll make a rough assessment of that and come out with that shortly. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान सीडीएस अनिल चौहान से यह पूछा गया था कि इस लड़ाई में भारत के कितने लड़ाकू विमानों का नुकसान हुआ है। इस पर सीडीएस चौहान ने साफ तौर पर यह जानकारी दी है कि नुकसान कितना हुआ है यह मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि हमने इससे क्या सीखा और इसके क्या परिणाम सामने आए हैं। यकीनन इसके परिणाम हर किसी के सामने हैं कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया और उसे बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। और अब सीडीएस चौहान ने एक बार फिर यह जानकारी दी है कि जल्द ही सेना यह आंकड़ा देश के सामने पेश कर देगी कि पाकिस्तान के कितने लड़ाकू विमान तबाह किए गए हैं और पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।